Assalamu alaikum. Today we will discuss about carbohydrates. What's carbohydrate? Carbohydrate is we can say carbon, hydrogen, oxygen compound composed of these three molecules. So that's also known as carbohydrates. Carbohydrates also called glucose compound. It has its rich source of energy which provides energy to the human body especially. Okay, carbohydrates are a energy rich compound. Okay. So carbohydrate, this is organic compound composed of carbon, hydrogen and oxygen. It's very important. 1% present in the protoplasm. Okay, carbohydrates are as a rich compound. Carbohydrates are classified on the basis of their carbon number: monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Mono means one, saccharide means sugar. Monosaccharides are those carbohydrates that cannot be changed into the changed into or further cannot be classified into, like glucose and fructose. If we classify glucose and fructose, then we cannot classify it. So because it's a monosaccharide. Monosaccharide always remain a simple compound. Okay. According number of carbohydrates, the carbohydrates are of different kinds, like a triose. Triose means three carbon compounds, tetras 4, pentas 5, and hexose 6 compound. All monosaccharides are white solid crystals, means all these monosaccharides present white solid crystals, and those monosaccharides having sweet taste and especially easily soluble in water. वाटर पानी के छा आसानी सां सॉल्युबल एंड वाटर में गिरी सघनि था ऐं इहो असां टेस्टी हूंदा, मिठा हूंदा, जेके मिसाल तौर पाण फ्रूट वग़ैरह खाईंदा आहिनि में छा कार्बोहाइड्रेट हूंदो आहे, कार्बोहाइड्रेट खे पाण ग्लूकोज कंपाउंड चई सघूं. Okay, monosaccharides are mostly found in various fruits, vegetables. Glucose, fructose are present in grapes. ग्रेप माना अंगूर. ग्लूकोज ऐं फ्रक्टोज कंहिं में अंगूर में मौजूदु आहिनि. इहो तमामु वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड आहे जेको रिच सोर्स ऑफ एनर्जी आहे, जेको असांजी बॉडी लाइ इंपॉर्टेंट आहे एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. सो कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड विच प्रोवाइड्स एनर्जी. ही चाहे कार्बन हाइड्रोजन ठाहे कॉम्बिनेशन में कार्बन हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन में पाई वञे थी, उनखे चवंदासीं कार्बोहाइड्रेट. It's found in especially honey में पाई वञे थो, फ्रूट में पाई वञे थो, ये जेके कमंद शुगर इन में पाई वञे थो, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज. लैक्टोज छा शुगर में पाई वञे थो, गैलेक्टोज इहो शुगर जो इन जी लैक्टोज जो पार्ट आहे, फ्रक्टोज फ्रूट में पाई वञे थो, ग्लूकोज शुगर कंपाउंड आहे. दीज आर आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट. Okay, lactose found in milk. Lactose, this is carbon, lactose, galactose, hexose and fructose. These are galactose, these are hexose compound, because having 6 carbon compound molecules, that's why we call hexose compound. Which if anybody asks what's hexose compound are those contain 6 carbon molecules, that's also known as hexose compound, like fructose, glucose, galactose, and these are also known as hexose. Carbohydrate, in previous we have discussed monosaccharide, but another classification is second type is disaccharide, third is polysaccharide. Disaccharide, di means two sugar compound, di means two sugar, combination of two sugar molecule also known as disaccharide, like glucose, then we get maltose. But while we combination more than 2 to 10 saccharides glucose molecule also known as oligosaccharide. Oligo means few, जेके कुछ कार्बन जा molecule मिली करी का टी प्रोडक्ट हमके चवंदासीं oligosaccharide. Okay, reaction we have given in below. Sucrose पान के sugar के पान sucrose is a common compound. It's found in the sugar cane. It's very important to source of energy. Fructose, glucose, these are cultivated for the production of sucrose. And it's not polysaccharide. Poly means many, saccharide means sugar. Polysaccharides are carbohydrates formed by the combination of many molecules of glucose. Poly means मुख्तलिफ molecules glucose से मिली करी ठाए होंगे जैसे polysaccharide. Starch and glycogen, cellulose. Starch also present in animals, in plants, while glycogen present in animals and cellulose present in plants, but rare number of cellulose present in animals, because animals have no such enzymes to digest the cellulose. Animal वर्षा मतलब cellulose digestion enzyme घट हूंदा त उनजे करे रेयर केस में cellulose एनिमल जी बॉडी में पाए वञे जेके एंजाइम हूंदा जेके सीकम जे पार्ट में हुते सिक्रेशन करे हिनखे डाइजेस्ट कंदा आहिनि.
हाँ क्वेश्चन है what is starch and what is glycogen. Both are these are also known as these are carbohydrate compounds. Okay, starch excess number of glucose molecules is stored in the form of starch and present in a plant में excess number of glucose के in form is stored in the starch form, while excess number of glucose stored in the form of the glycogen in animals also known as a glycogen उनके जनरल से excess number of glucose molecule जो एनिमल जे के मसल में स्टोर थी उनके जनरल से जा ग्लाइकोजन. ओके, उनका भी है स्टार्च कंपोज्ड ऑफ मैनी molecules which are linked together in a straight वे जेके स्टार्च है मेली मुख्तलिफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिली करी स्ट्रेट वे ठाहींदा आहिनि स्ट्रेट और ब्रांचड वे दैट्स आल्सो नोन एज स्टार्च फाउंड इन लीव्स of the plants, roots and seeds, granule. For example, if we talk about the potato में चाहे स्टार्च पाई होंगे तो wheat rice है इनमें स्टार्च पाई होंगी तो it's insoluble water. स्टार्च है insoluble water स्टार्च ही insoluble water, but when boiled it becomes soluble. जॾहिं इनके जा बॉयल कंदासीं, जॾहिं इनके जा सपोज पाण इनके हीट ॾींदासीं, इनके गर्म कंदासीं त हीअ छा आहे सॉल्युबल थी सघे थो. जॾहिं असां जनरली छा आहे जॾहिं असां हीट न ॾींदासीं छा इनसॉल्युबल हूंदो आहे. By hydrolysis it's broken into simple compounds takes part in the formation of the energy by oxidation. हाइड्रोलाइसिस ज़रिए इनके पाण टोड़ी एनर्जी हासिल कर सघंदा उन प्रोसेस के चवंदासीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ओके, ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस इन विच वी कैन ब्रेक द कंपाउंड्स इन सिंपल मॉलिक्यूल्स. दैट्स आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. हाँ हेठि अची वियो ग्लाइकोजन जेको एक्सेस ग्लूकोज जेको हूंदो आहे जेको एनिमल जी बॉडी में स्टोर थिए ग्लाइकोजन आहिनि. जॾहिं एक्सेस जेको ग्लूकोज हुजे थो स्टोर थी इन प्लांट जी बॉडी में उनखे चवंदासीं स्टारेज. ओके, सेल्यूलोस स्पेशली प्लांट सेल वाल में पायो वञे थो, पर कुछ बैक्टीरिया वग़ैरह हूंदा आहिनि जेके सेल्यूलोराइजेशन में सीकम वग़ैरह हूंदो आहे. इहो मतिलबु रेक्टम जे अपर पार्ट में हिते एलिमेंट कैनाल में सीकम बैक्टीरिया हूंदा जेकी डाइजेस्ट कंदा सेल्यूलोस मां रेयर केस में पाई वञे थो. ओके, हाणे आहे व्हाट्स फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिच सोर्स ऑफ कंपाउंड. कार्बोहाइड्रेट छा आहे हिकु रिच कंपाउंड आहे विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द body. Carbohydrates can be changed into other some compound. Extra number of glucose changed into glycogen in animals, but while excess number of glucose is stored in the form of starch in plants. Carbohydrates are a complex compound which gives energy and which make the organ strong, and cellulose form the carbohydrate in plants में carbohydrate पाई वञे तो carbohydrates these are very important compound which gives a rich source of energy.